इससे पहले हमने करा था यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन like specifically how do consumer price index help. अब index numbers, बहुत सारे टाइप के index numbers है ना, तो what are the uses of index numbers? Index numbers being extensively used to record changes in output, income, employment, productivity, business activities, etc. Index numbers are applied to measure variations in almost all the spheres of economic activities. In the words of M. Blair, index numbers are the signs and guideposts along the business highway that indicate to the businessman how he should drive or manage his affairs. Pattern predict कर पाते हैं वो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. So what are the uses of index numbers? Just be careful. Uses of consumer price index, अलग question है. Uses of index numbers, अलग question. And helps in policy formulation. Index numbers are indispensable tools for the management of any government or non-government organization. किसी की भी decision making में ये काम आ सकते हैं. Policy formulation. They help in studying the trends of various phenomena, and these trends and tendencies are the basis on which many policy decisions are taken. They are also used in planning and formulating various government and business policies. So they help in policy formulation. Number 2, index numbers act as economic barometers. A barometer is an instrument that is used to measure atmospheric pressure. Generally, कि barometer क्या होता है? It is an instrument which is used to measure the atmospheric pressure. Index numbers economic barometer है. Economic, they measure the pulse of an economy and act as a barometer to indicate fluctuation in the general economic conditions of an economy. Economy का barometer है. Economy का pressure कि मतलब boom, growth, recession, तो ये सब numbers ही तो बताते हैं. GDP numbers. They help in studying trends. Index numbers are very useful in studying the trend or tendency of a series spread over a period of time. They help to find out trends of exports, imports, industrial production, prices, and a variety of other phenomena. They also help in forecasting the future trends, which is very important for future operation of any business or production activity. So trends सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं होते, वो यूज होते हैं, डेटा यूज करेंगे पास्ट और प्रेजेंट का, एंड दे हेल्प इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कि आगे जाके क्या लग रहा है हमारा, किस पैटर्न पे हम मूव कर रहे हैं. To measure and compare the changes, index numbers, they help in comparative changes in two variables. It is not possible to measure changes in absolute terms, but index numbers, they provide a relative measure to change in the magnitude of a group of variables. Absolute terms, actual values में changes नहीं, percentage change, relative change. The changes over time and geographic location can be easily compared. Index numbers, they help to measure the purchasing power. Important point था ये हमने कर लिया. The value of money depends on its purchasing power, and purchasing power of money depends on the prices of the commodities. The changes in prices, they adversely affect the value of money. चीजें महंगी होंगी तो मनी की वैल्यू गिरेगी. When the price level goes up, the value or purchasing power of money falls. Price level, महंगाई बढ़ रही है तो अब आप same amount of money से कम सामान खरीद पाएंगे. Sometimes it is said that a rupee today is worth only 20 paisa as compared to its purchasing power in 1980. तो 1/5 वैल्यू रह गई है as compared to 1980. Index numbers are helpful in finding out the intrinsic worth of money as contrasted with its nominal worth. This helps in formulating the wage policy of the country. Index numbers, they help in deflating various values. Deflating. The price index number helps to adjust the monetary figures of various periods for changes in prices. For example, the figure of national income of a country is computed on the basis of the prices of the year in question. National income क्या होता है? It is the value of final goods and services produced in
अ कंट्री इन 1 ईयर, तो वो करंट ईयर प्राइसेस कंसिडर कर रहा है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, मैं पिछले साल 50,000 यूनिट्स बनाई थी, एग्जांपल 50,000 यूनिट्स बनाई थी 2021, इमेजिनरी फिगर्स है, 2021 22 मैंने बनाई थी पिछले साल 50,000 यूनिट्स, इस साल भी बनाई 50,000 यूनिट्स। पिछले साल उनका प्राइस था 10 रुपीज, अब उनका प्राइस हो गया 20 रुपीज। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। पिछले साल कितने का सामान बना? 5 लाख। 5 लाख। इस साल कितने का सामान बना? 10 लाख। तो नेशनल इनकम तो डबल हो गई। यस और नो? यस सर। क्या एक्चुअल ग्रोथ हुई है नेशन की? हम पहले भी 50,000 यूनिट्स बनाते थे, हम अभी भी 50,000 यूनिट्स बनाते हैं। नेशन एक्चुअली ग्रो हुआ है उतना बड़ा जितना फिगर्स दिखा रहे हैं? नो सर। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से आपकी नेशनल इनकम ज्यादा हो गई। यस सर। तो इसको डिफ्लेट करेंगे तभी जाके रियल ग्रोथ पता चलेगी। यस सर। यस सर। और ज्यादा इन्फ्लेटेड फिगर्स है। यस सर। यस सर। तो ये है इस लाइन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, द फिगर ऑफ नेशनल इनकम of a country computed on the basis of prices of the current year in question. However, national income at current year prices does not reveal the real change in the level of production. नहीं करते वो इंडेक्स नंबर्स, दे हेल्प इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज। अब इस लाइन का मतलब समझ आया? इंडेक्स तो इसका 200 हो गया ना, कि जो चीज 100 की थी वो 200 की हो गई। तो इंडेक्स नंबर्स दे हेल्प इन डिफ्लेटिंग वेरियस वैल्यूज। समझ आई इस लाइन का मतलब? यस सर। Okay. In order to know the real change in national income, these figures must be adjusted for the price changes in various years. Such adjustments are possible only by the use of price index numbers, and the process of adjustment in such a situation of rising prices is known as deflating. So we must deflate the national income based on current year prices to calculate the actual real change in national income. Important है uses of index numbers. How index numbers help in formulating wage policy of the country? तो जो हमने एग्जांपल लिया था आपस में भी बातों में, suppose a person used to earn 10,000 per month in the year 2011. The cost of an item in that year was 1,000 rupees. कोई चीज था वो 1,000 रुपए की थी. It means that the person could purchase 10 units of the item. अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, कोई आइटम 1,000 रुपए का, तो आप उसके 10 यूनिट्स ले सकते हो. In the year 2019, the same person earns 20,000 per month, and that cost of that item is 2,500. तो क्या आप 10 आइटम्स ले सकते हो अपनी इनकम में? नहीं सर। 8 ले सकते हो मैक्सिमम. Now he could purchase only 8 units with 1 month's earnings. It means the effect of monthly earnings relative to particular item is less. मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है. यस सर। यस सर। Thus, a person who was earning rupees 10,000 in 2011 should earn, मैं कह रहा हूँ अगर सेम लेवल ऑफ इनकम मेंटेन करना है, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो 10 आइटम्स तब खरीद पाता था. अब 2,500 का आइटम हो गया, तो 10 आइटम खरीदने के लिए अब आपको कितने रुपए चाहिए? 2,500 into 10, 25,000 रुपीज. यस सर। तो कितनी इनकम होनी चाहिए? बस वो है सेम चीज जो हमने अभी न्यूमेरिकली करा. तो है ना, हाउ इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द वेज पॉलिसी. तो जो अभी हमने क्वेश्चन भी करा था कि अगर 4,000 तब थी, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 400 हो गया है, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए? समझ आया ना? सेम चीज है दोनों. यस सर।